अस्सलाम वालेकुम, आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं स्लोवेनिया क्रिकेट ग्राउंड से। KCC हाला फब्रायर T20 नेशनल चैम्पियनशिप का चौथा मैच और आज का दूसरा मैच, और जो कि कुवैत चीताज और कुवैत ईगल्स के दौरान खेला जा रहा है। यहाँ पे टॉस टाइम है। अब देखते हैं कि टॉस के टाइम पे क्या रिज़ल्ट आता है सामने। टॉस के लिए मौजूद हैं दोनों कप्तान अमीन, जो कि लीड कर रहे हैं अपनी कुवैत चीतास को। कल का एक मैच जीत कर आए थे। और दूसरे कप्तान कुवैत ईगल्स के अदनान इदरीस। उन टूर्नामेंट की गाइडलाइंस जो भी हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इमरान हाजी मुस्तफ़ा दे रहे हैं। उनके साथ ही अंपायर हैं। और 100 is the call from Cheetas. दानी ही रहना भी है। पहले से बात कर इधर सामने दानी पीछे रहना थोड़ा सा। हमारे साथ कुवैत चीतास के कैप्टन अमीन मौजूद हैं। अमीन, पहले तो मुबारक हो, आप पहला मैच अपना जीते हुए हैं। थोड़ा सा बताएंगे आज के मैच के लिए क्या प्लानिंग है? विकेट अभी रोल हो रहा है, तो थोड़ा उम्मीद है कि इसमें ब्रेक कम हो जाएगा। अभी थोड़ा सेकंड बैटिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दोबारा इस पे टर्न होना शुरू हो जाएगा। इसलिए टारगेट सेट करेंगे इंशाल्लाह, बोर्ड पे अच्छा स्कोर, तो डिफेंड करेंगे। स्पिनर हमारे अच्छे हैं, ब्रेक भी हो रहा है, मज़ा आएगा मैच का। आपने कल जो है टॉस जीत के पहले उनको दावत दी थी खेलने की। हालांकि लाइट्स के अंदर स्कोर चेस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज आपने टोटली रिवर्स फैसला किया है। होपफुली आपके फैसले जो हैं यकीनन आपकी टीम के लिए मदद साबित होंगे। आप क्या समझते हैं आज के मैच में आपके लिए कौन सा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाला है? कल का मैच जैसे आपने बोला है कि बिल्कुल हमने रिवर्स कर दिया इसको। कल के मैच में थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, थोड़ा लाइट का इशू था, इसलिए हमने सोचा कि बैटिंग सेकंड करेंगे, क्योंकि उस टाइम अंधेरा हो जाता है। बैटिंग फर्स्ट करना पिच पे थोड़ा आसान नहीं होता। तो आज के मैच में मेरे जो टर्म कार्ड हैं वो स्पिनर ही हैं मेरे। इंशाल्लाह इस विकेट पे जो अच्छा स्पिनर है वो फंसा लेता है बैट्समैन को। रन करने आसान नहीं है। इंशाल्लाह बैटिंग फर्स्ट करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, तो मज़ा आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अदनान इदरीस मौजूद हैं। और अदनान, एक बड़ा नाम कुवैत क्रिकेट का, और थोड़ा सा देखिएगा कैमरे की तरफ भी, एक बड़ा नाम कुवैत क्रिकेट का। आप खुद और आपके साथ मौजूद एडिसन हैं, और डीजू शायद आज के मैच में नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि फ़र्क पड़ेगा डीजू के ना होने से? फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को कवर करने के लिए। विकेट जो इससे पहले मैच देखा है उस पर जितना को ब्रेक हो रहा था, आई थिंक सो हमें पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। आई एम स्टिल हैप्पियर विद दिस डिसीजन। तो इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा ये। यानी टॉस का आपके कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है हारना या जीतना। तो अभी आप क्या क्या समझते हैं कि डीजू को जो रिप्लेस करवा रहे हैं, कौन से नए, कोई आप नाम बताएंगे हमें उनका? डीजू की जगह हमने नवीन जैकब को खिलाया। नवीन जैकब भी अच्छा प्लेयर है ऑलरेडी, काफ़ी, यानी कि उसके अगर आप उसके स्टैट्स देखें काफ़ी अच्छा ही प्लेयर है वो भी डीजू के अगेंस्ट। बट डीजू जैसी क्लास नहीं है उसकी, लेकिन स्टिल हमें वो ज़रूर बेनिफिट करेगा स्क्वाड के अंदर। कितने स्कोर पे पकड़ने का इरादा है? जितना मिनिमम हो सके। हमारे प्लान तो यही है कि 130-140 तक इनको डिस्ट्रिक्ट करें हम लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू तारिक भाई। तो हमारे साथ मौजूद थे दोनों कप्तान कुवैत ईगल्स के अदनान इदरीस, जिन्होंने कहा कि उनका आज एक स्टार बैट्समैन डीजू मौजूद नहीं है, और उनकी जगह पे नवीन जैकब को टीम में इन किया गया है। नवीन जैकब भी अपनी तर्ज के बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी अच्छी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारी बात हुई चीतास के अमीन से। उन्होंने कहा कि आज टॉस जीत के जो है पहले खिलाने का मकसद यही है कि वो चाहते हैं कि कम से कम रन्स पे आज उन्होंने जल्दी पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि उनके अपने स्पिनर्स पे काफ़ी भरोसा है कि वो जितना भी स्कोर हो वो डिफेंड कर लेंगे। अब चंद लम्हों बाद जब मैच शुरू होगा, यकीनन हम देखेंगे एक और क्वालिटी क्रिकेट मैच, और इसमें हम देखते हैं कि दोनों कप्तानों ने जिस अज़म का इजहार किया है वो किस हद तक उस पर पूरा उतरते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आपसे दोबारा
कमेंट्री के ज़रिए मिलते हैं।
एक बार फिर आपको सलेबिया क्रिकेट ग्राउंड से खुशामदीद कहते हैं, जहां पर KCC हाला फब्रायर T20 नेशनल चैम्पियनशिप के मैचेस अपनी जोश व खरोश से जारी हैं। अभी इससे पहले के मैच में कुवैत फ़ाल्कन ने अपना दूसरा मैच जीता और अपने आप को साबित किया कि अभी सबसे भारी टीम हम हैं। और अभी एक इस टूर्नामेंट का जो चौथा मैच है वो कुवैत चीतास वर्सेस कुवैत ईगल्स के दरमियान होगा, जबकि कुवैत चीतास एक मैच जीत कर इस राउंड तक अगले मैच तक पहुंची है, जबकि कुवैत ईगल्स जो है उनका सेकंड मैच है, देखते हैं वो इस मैच में कहां तक पहुंचती हैं। जबकि इसका आज का टॉस चीतास ने जीता और उनके कैप्टन अमीन ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टॉस के टाइम पे जो हमारी उनसे बात हुई थी अमीन से, तो अमीन कह रहे थे कि उनको अपने स्पिनर्स पे ज़्यादा भरोसा है और उनको उम्मीद है कि वो जितना भी टोटल करेंगे उनके स्पिनर्स जो हैं इस दूसरी टीम को पकड़ लेगी। और उन्होंने जिक्र किया कि इस पिच के ऊपर दोनों कप्तानों ने बाद में अदनान ने भी वही बात की कि हम विकेट देख रहे हैं कि विकेट स्पिनर्स के लिए काफ़ी साजगार है, सो बॉल का वेट करना पड़ता है और उसके बाद फिर जो है रन्स बनते हैं। इस सेकंड मैच को सुपरवाइज़ कर रहे हैं सज्जाद और इमरान, और जबकि स्कोरर लॉयड और उनके साथ मौजूद हैं साजिद, जबकि कमेंट्री के फ़राइज़ जो है तारिक रसूल शाह मैं ख़ुद इंजाम दूंगा। और आप सबको दोबारा से वेलकम करते हैं, जबकि हमारे पास कैमरामैन जो हैं वो साबुन है। और आप देख रहे होंगे ये मुनीब स्टार्ट लेंगे गार्डन एंड से। अच्छा बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। हमने कल भी देखा कि मुनीब एक्स्ट्रास जो हैं ज़्यादा उस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अपने पेस पे ज़्यादा फोकस करें, और फास्ट बॉलर्स जब पेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो अक्सर नो बॉल, उनका फुट स्टेप्स और वाइड्स हो ही जाती हैं। जबकि पहले मैच में 50 रन 53 रन की इनिंग खेलने वाले आमिर महमूद, जिनको आमिर मुल्ला के नाम से जाना जाता है, वो सामना करेंगे मुनीब। अच्छा बॉल, इस बार खुद ही अपनी बॉल पे फॉलो थ्रू में फील्ड किया। और आमिर कुवैत की नेशनल टीम के साबिक कैप्टन भी रहे हैं, नेशनल टीम का हिस्सा भी रहे हैं, फिर अपनी इंजरीज़ की वजह से थोड़ा सा टीम से बाहर हो गए। और इस KCC हाला फब्रायर T20 नेशनल चैम्पियनशिप 2022 का जो सबसे बड़ा ख़ासा है वो यही है कि इस किस्म के वो प्लेयर्स जो कि समझते हैं कि उनको नेशनल टीम का हिस्सा होना चाहिए, उनके लिए स्टेज सजाया गया है। आप आइए, आके परफॉर्म कीजिए और कोचेस को और सेलेक्टर्स को अपनी जानिब मुतवज्जा कीजिए। मुनीब एक बार फिर काफ़ी तेज़ बॉल वाइड किया और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, कीपर के भी काबू में नहीं आई और अंपायर का इशारा 4 रन। कल के मैच में डीजू विकेट कीपिंग कर रहे थे। डीजू किसी वजह से उनको इमरजेंसी में मुल्क से बाहर जाना पड़ा, तो उनकी जगह पे अब चांस मिला है नवीन जैकब को। यही क्रिकेट की खूबसूरती है कि जहां आपको चांस मिलता है उस चांस को आप अवेल कीजिए। अब देखते हैं कि नवीन जैकब जो है इस चांस को किस तरीके से अवेल करते हैं। मिडल ऑर्डर में बहुत अच्छे बैट्समैन तस्वुर किए जाते हैं, फ्यूचर स्टार्स की तरफ से खेलते रहे हैं ए डिवीज़न लीग। आमिर सामना करेंगे मुनीब का, जिन्होंने एक्स्ट्रास से अब तक 6 रन दे चुके। अच्छा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था, लेकिन लेग साइड से वाइड। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कल के पिछले मैच में भी मुनीब जो है एक्स्ट्रास पे काम नहीं कर रहे थे। यकीनन कोचेस जो मैचेस देख रहे हैं इनके, वो उनकी इस चीज़ पे काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो इन वाइड्स को, इन नो बॉल्स को कम से कम कर सकें। मुनीब गार्डन एंड से एक बार फिर सामना कर रहे हैं आमिर। और जैसा कि मैंने बताया था कि आमिर अपनी धुआंधार बैटिंग से मशहूर हैं। उन्होंने छक्का मार के मेरी इस बात की तरदीद की कि उनकी जो एनर्जी है, उनका जो गेम है, उनका जो खेल का स्टाइल है, उनके जो 6 मारने का काफ़िला है वो अभी रुका नहीं, अभी थमा नहीं, वो चलता रहेगा। वो अपनी धुआंधार बैटिंग से न सिर्फ
अपने फैंस को महसूस करेंगे, बल्कि अपनी टीम के लिए भी साजगार साबित होंगे। कल अपने ने 53 रन्स किए थे, आज अपनी इनिंग वहीं से दोबारा शुरू की और जैसे ही उनको सामने बॉल मिला उन्होंने उसको 6 रन में कन्वर्ट किया। मुनीब को काफ़ी सोच समझ के इनको बॉल करनी पड़ेगी। कम बॉलों पे ज़्यादा रन्स करते हैं, सिंगल्स डबल्स पे कम फोकस करते हैं, यह आमिर की ख़ास बात है। और एक और वाइड बॉल, पहले ही ओवर में 3 वाइड्स, जबकि एक वाइड पे पीछे 4 रन्स भी बाउंड्री भी क्रॉस कर गई थी, बॉल विकेट कीपर नहीं पकड़ सके थे। पहले ही ओवर में हमने देखा था पिछले, जब हारून गेंद करते हैं वो विकेट ले लेते हैं। यहाँ पे रिदम हासिल करने में थोड़ा टाइम लेते हैं और एक प्रेशर जो बिल्टअप होने वाला होता है वो आस्ते आस्ते रिलीज होना शुरू हो जाता है बैट्समैन के ऊपर से। एक बार फिर वाइड और फिर एक दफ़ा बॉल बाउंड्री राउंड क्रॉस कर जाएगी। जी हाँ, एक्स्ट्रास के 5 रन और अभी सिर्फ 2 बॉलें हुई हैं और एक्स्ट्रास के 14 रन हैं, जिसमें एक छक्का भी शामिल है। कप्तान भाग कर आए और सीनियर प्लेयर्स थोड़ा सा उसको समझाते हुए कि 4 ओवर लिमिट है, अगर आप इस सारी लिमिट इसी में ऊपर कर देंगे तो बाकी कैसे करेंगे आप। आज हालांकि विंड ज़्यादा नहीं है इतनी, अपनी प्रॉपर लाइन में अगर वो बॉल करें तो बॉल उनकी वाइड नहीं जाएगी। पहले ऑफ साइड से वाइड्स की हैं, ब्लैक साइड से वाइड कर रहे हैं। जो सीधा गेंद करते हैं वो आमिर गार्डन में फेंक देते हैं। अजीब कशमकश का शिकार हैं सैयद मुनीब, हालांकि काफ़ी तेज़ गेंद करते हैं और अपनी बॉलिंग से कई मैच जिता भी चुके हैं। इस बार शॉर्ट पिच डिलीवरी, गुड लेंथ से बॉल उठाई और आमिर ने इसको बड़े इत्मीनान से पॉइंट की जानिब खेला। जहाँ नितिन मौजूद, और यही वो वाइड्स होती हैं जिसके बिना पर बाद में कप्तान को जो है पेनल्टी पड़ती है और उनके ओवर्स जो है वो कटते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे जो है काम करना पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त बॉल, आउट। अपने पेस से इस बार कामयाब हुए कट करने में और नासिर का खूबसूरत कैच। अच्छा खासा तेज़ गेंद करते हैं और स्लिप में टाइम कम होता है फास्ट बॉलर्स के कट के ऊपर, और लेकिन नासिर ने कोई गलती नहीं की और साबित किया कि वो स्लिप के बेहतरीन फील्डर्स में से एक फील्डर है। आमिर डेंजर मैन, आउट। एक ही छक्का मार सके, लेकिन स्कोर बोर्ड पे रन्स 19 नज़र आ रहा है, जो उसमें एक्स्ट्रास का सबसे बड़ा हाथ है। 5 वाइड्स की 2 बॉलों पे जो बाउंड्री पीछे से क्रॉस कर गए उसकी वजह से 10 रन्स ऐसे ही एक्स्ट्रा चले गए थे। सारे सीनियर्स प्लेस के नरगे में सैयद मुनीब, जिन्होंने अपनी टीम को पहले ओवर ब्रेक थ्रू दिलवाया, और यकीनन एक रिलीफ मिला होगा कप्तान अदनान इदरीस को भी और उनकी टीम को भी कि आमिर महमूद, जो आमिर मुल्ला के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं, उन्होंने जो जिस तरह से वो 6 मारते हैं, अगर वो जल्दी आउट हो गए तो यकीनन एक लंबा स्कोर जो है वो करने में उनकी टीम कामयाब नहीं होगी। जबकि दूसरे एंड पे दानिश कालू हैं, जो कि अपनी स्ट्राइक का अब तक वेट कर रहे हैं, और नया बैट्समैन है अनीस डार खान। ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद इस टीम तक पहुंचे हैं। उनको चांस मिला है कि ये बड़ा टूर्नामेंट, जो कि कुवैत क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टूर्नामेंट तस्वुर किया जाता है, इसका हिस्सा बने। और इस बार नासिर के पाँव पे बॉल लगी, एक चौका तो यकीनन रुक गया है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या नासिर बाकी मैच खेल पाएंगे। काफ़ी तकलीफ में नज़र आ रहे हैं।
अदनान अपने आप को मुनीब के करीब ही प्लेस करते हुए ताकि वो उनकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से गेन कर सकें। मुनीब अच्छे स्टार्ट के साथ बहुत अच्छा खूबसूरत बॉलिंग एक्शन और अच्छा पेस के साथ बॉल किया। इस बार मिस फील्ड हुई और 4 रन्स। ज़्यादा पेस का यही एक नुकसान होता है। और अंपायर का इशारा, नो बॉल, एक फ्री हिट। इस टूर्नामेंट का अब तक का सबसे लंबा तरीन ओवर और महंगा तरीन ओवर। 21 रन बन चुके हैं अब तक और इसमें अभी तक सिर्फ 4 बॉलें हुई हैं। यकीनन इस मौके पे अदनान इदरीस कह रहे होंगे चले मैं बाद में बताऊंगा। मुनीब इस बार अच्छा बॉल था, अदनान के पास गया, अदनान ने उसको फील्ड किया और कोई रन नहीं बना। आखिरी बॉल। अब तक 26 रन बन चुके हैं इनके इस ओवर में, जिसमें एक्स्ट्रास का ढेर लगा हुआ है। इस किस्म के ओवर्स जो हैं कप्तान को मुश्किलात में डाल देते हैं, उनके फिर ऊपर पेनल्टीज़ पड़ती हैं। याद रहे कि पिछले मैच में भी अदनान जो है 1 ओवर पेनल्टी पड़ी थी उनके ऊपर और उनकी टीम जो है वो 19 ओवर्स में टारगेट चेस करने को मिला था। अगर इसी किस्म के ओवर्स करती रही इनकी टीम तो ये पेनल्टी ज़्यादा भी हो सकती है। ऑलमोस्ट उन्होंने 2 ओवर्स का टाइम जो है स्पेंड कर लिया है, तो इनको थोड़ा और ज़्यादा जल्दी करनी पड़ेगी। पहले ओवर के अख्ताम पे 26 स्कोर, कुवैत चीतास वर्सेस कुवैत ईगल्स। कुवैत चीतास ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और उनके बैट्समैन से ज़्यादा कुवैत ईगल के बॉलर सैयद मुनीब ने काफ़ी थोड़ी सी कंट्रोल से बॉलिंग नहीं की। ना सिर्फ उन्होंने वाइड्स बॉल की बल्कि उन्होंने नो बॉल्स भी की और 26 रन का एक बड़ा स्कोर भी टोटल स्कोर बोर्ड पे लग चुका है। इनको थोड़ा काम करना पड़ेगा अब ताकि आने वाले मैचेस में वो बेहतर बॉलिंग कर सकें। लेकिन उन्होंने एक ब्रेक थ्रू दिया अपनी टीम को आमिर की सूरत में, आमिर की विकेट उन्होंने हासिल की। दूसरे बॉलर हमूद जंडू हैं जिन्होंने कल ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी और उम्मीद करते हैं आज भी वो अपने उसी स्टाइल में उसी फॉर्म के साथ बॉलिंग करेंगे। हमूद अच्छा बॉल, कंप्लीटली बीट हुए अनीस। झंडू का एक और बॉल, एक दफ़ा फिर सेम लाइन पे बॉल, सेम तरीके से बीट हुए अनीस। अनीस कल के मैच में भी काफ़ी स्ट्रगल करते रहे थे। झंडू एक बार फिर, इस बार काफ़ी बाहर गेंद था और इसको देखते हुए उन्होंने जाने दिया और अंपायर इमरान मुस्तफ़ा हाजी का इशारा कि वाइट बॉल। यकीनन एक बड़ा एक्स्ट्रास का मिस्टर एक्स्ट्रास का स्कोर भी हो सकता है इस टोटल में, हम देखेंगे एट द एंड। हमूद ज़बरदस्त बॉल, एक बार फिर कंप्लीटली बीट हुए अनीस। एक और अच्छा बॉल, थोड़ा सा समझने के से अंदाज से अनीस ने खेला है ताकि वो समझ सकें किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, इस पिच का बिहेवियर कैसा है, ताकि उसी हिसाब से वो अपनी बैटिंग की हिकमत अमली तैयार कर सकें।
जिंदू अपनी ज़बरदस्त बॉलिंग के साथ बड़े एथलेटिक टाइप के हैं, ख़ुद फील्ड करने गए हैं, थोड़ा सा स्लाइड करते हुए फील्ड किया। वन ऑफ द बेस्ट अपने फील्डर भी हैं इस टीम के, यंग हैं, कुवैत की अंडर 16 अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे हैं उन तमाम फेजेस से जो कि एक बेसिक क्रिकेट की चाहिए होती है, वो सब सीख कर आए हैं अपने कोचेस से। और अब ये टाइम है उसको यूटिलाइज़ करके अपने आप को बूस्ट करके नेशनल टीम का वैसे ही पहले से हिस्सा हैं, अपने आप को मुस्तहकम करने का। KCC हाला फब्रायर T20 नेशनल चैम्पियनशिप 2022 ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को दिखाकर जगह बना सकते हैं कुवैत की नेशनल टीम में और कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं जो कि पेड क्रिकेटर्स का होता है यहाँ पर। और एक बड़ा अच्छा एहसन इकदाम कुवैत क्रिकेट क्लब का कि वो क्रिकेटर्स को ना सिर्फ फाइनेंशियली इस तरीके से सपोर्ट मिलती है बल्कि एक कंपटीशन की फ़िज़ा कायम होती है और इसी कंपटीशन में जो है आप इस किस्म की कम्पिटिटिव क्रिकेट देखते हैं। एक बार फिर मुनीब आए हैं, कप्तान ने एक बार फिर एतमाद किया है उन पर और पॉइंट की जानिब खेला, लेकिन वहाँ पे फील्डर मौजूद बड़े इत्मीनान से फील्ड किया उन्होंने, कदरे बेहतर लाइन और लेंथ के साथ बॉल की है मुनीब ने। अनीस 7 बॉलें खेल चुके हैं, 1 रन सिर्फ बनाया उन्होंने। हमने झुंडों के ख़िलाफ़ उनको स्ट्रगल करते हुए देखा था, शायद वो विकेट का बिहेवियर सामने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हमें टॉस टाइम पे दोनों कप्तानों ने कहा कि जो उनकी भी ऑब्जर्वेशन है और हमने ख़ुद भी देखा कि गेंद काफ़ी बॉलर को सपोर्ट कर रहा है, वो जो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन है सिर्फ वही खेल पा रहे हैं इसमें। एक और अच्छा बॉल, मुनीब लगता है रिदम हासिल करने में कामयाब हो गए। 24 रन पिछले ओवर में बने थे एक्स्ट्रा सारे मिलाकर, किसी हद तक अच्छा सहारा दिया महमूद जंजू ने, सिर्फ 4 रन दिए अपने ओवर में। होशियारिया 2 ओवर का खेल, 28 रन स्कोर बोर्ड पे और 1 खिलाड़ी आउट। द डेंजर मैन आमिर इज आउट। अच्छा बॉल और रन आउट का खदशा, पीछे बैकअप में कोई नहीं था लेकिन चांस लिया और लेना भी चाहिए था। और बेहतरीन पिक एंड ड्रॉप, लेकिन पिक एंड थ्रो। हमूद की तरफ से मुनीब एक बार फिर थोड़ा सा आगे निकल के खेलना चाहते थे दानिश कालू, मगर बॉल की अच्छा पेस था, टाइम कम था उनके पास, तो उन्होंने सिंगल पे इत्तेफाक किया। अदनान बिल्कुल उनके करीब खड़े हुए जहाँ पे उनका स्टार्ट होता है, उनको हर बॉल के बाद इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। उनके मालूम है कि ये वो बॉलर हैं जो उनको विकेट दिला सकते हैं। काफ़ी तेज़ बॉल किया था, अपने पेस से बीट कर रहे हैं, वो अगेंस्ट द विंड बॉल कर रहे हैं लेकिन अच्छे पेस से गेंद कर रहे हैं। अनीस अभी तक वो जौहर नहीं दिखा सके हैं जिनके बिना पर वो इस टीम का पार्ट बने हैं। अच्छी बैटिंग करते हैं, यकीनन वो रीड कर रहे हैं इन बॉलर्स को, पिच के बिहेवियर को, और आने वाले टाइम में वो शायद कुछ बेटर अंदाज से चार्ज करेंगे। मुनीब वहाँ मौजूद हैं, खुद कप्तान अदनान इदरीस, और कदर बेहतर ओवर याला जिसमें सिर्फ 2 रन दिए, कोई एक्स्ट्रास के नहीं दिए। ये वो क्लास है इनकी, मुनीब की, जिसकी बिना पर वो नेशनल टीम का पार्ट हैं और नई बॉल से गेंद करते हैं और अपने पेस से जो है अर्ली ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। अफवान ब्रीड, इंतहाई जोश व खरोश, मजबूत जिस्म और काट के मालिक, बेहतरीन खूबसूरत रनअप, हाई आर्म एक्शन,
जो कि कंप्लीट एक बॉलर में होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत अच्छे कैचेस पकड़ते हैं कि मोस्टली हमने देखा है फास्ट बॉलर अच्छे फील्डर नहीं होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे फील्डर भी हैं और वक्त आने पर लो ऑर्डर में ये अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं। हमूद कंटिन्यू करेंगे दूसरे एंड जिन्होंने सिर्फ 2 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, और अनीस को काफ़ी उन्होंने परेशान किया था। इस पर देखते हैं कि दानिश कालू क्या करते हैं, और रन आउट होने का डर हो सकता है, लेकिन अच्छे एफर्ट्स, अच्छी कोशिश, अच्छी ट्राई, फुल मार्क्स मिलने चाहिए मुनीब को इस पर, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी और बगैर रुके अनीस जो है वो अपनी क्रीज़ में आ गए। जिस तरीके से उन्होंने बॉल को पिकअप किया, पिकअप करके डाइव के अंदाज में उन्होंने बॉल को फेंका, एक अच्छे एथलीट की ये निशानी होती है। और फास्ट बॉलर्स मोस्टली इस किस्म का उनको इशू रहता है, वो नहीं ज़मीन की तरफ ज़्यादा जाते, लेकिन उन्होंने फुल लेंथ डाइव मार के गेंद को पिकअप करते हुए हवा में ही गेंद को उछाल दिया था। जॉन्टी रोड्स की याद करा दी हमें। जिंदू एक बार फिर अब बॉल करेंगे अनीस को, और कैच हो सकता था। जी हाँ, डाइव मार के कैच पकड़ा अदनान कप्तान ने। हमने देखा आज सुबह भी 2 ऐसे खूबसूरत कैच, तो अंदाज़ा हो रहा है हमें कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रही है इस कंपटीशन में, फील्डिंग में भी। और वो कैचेस जो कि हमने पिछले मैच में देखा था कि ड्रॉप किए थे कुवैत ईगल्स के प्लेयर्स ने, आज ये मुश्किल कैच था, लेकिन अदनान ने आगे डाइव मार के इस कैच को उठाया और कोई गलती नहीं की। और अनीस जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे, पवेलियन में वापस अनीस, इकबाल, दर खान, इन्होंने 12 बॉलें खेल के 2 रन बनाए थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ट्रबल में रखा हुआ था उनको। दोनों दफ़ा ज़्यादातर उनकी जो बॉलर थे सामने वो महमूद जंगजू थे। अंडर 19 क्रिकेट से नेशनल टीम तक पहुँचे हैं वो, अंडर 16, अंडर 19 सारी अंडर एज क्रिकेट खेल कर आए हैं। और अपने कोचेस को उन्होंने काफ़ी मुतासिर किया और रिकमेंड किए गए कि आप इनको नेशनल टीम में भी लें। नेशनल टीम में जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी उन्होंने फुलफ़िल की, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से और अपने फील्डिंग से। बहुत अच्छे क्लास के फील्डर हैं, बड़े एनर्जेटिक एथलेटिक टाइप के हैं। और आप फील्डिंग में इनको अब जिमनास्टिक करते हुए भी देख सकते हैं, किस मज़े से उछल के जंप मार के इधर उधर ये फील्ड कर रहे होते हैं। जिंदू नेशनल टीम का हिस्सा हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं किस बात पे टीम का हिस्सा हूँ, बेहतरीन बॉलिंग करते हुए। और कल बैटिंग में इन्होंने लगातार 3 छक्के रसीद किए थे शाहरुख जो कि कुवैत के, जिनका शुमार कुवैत के अच्छे फास्ट बॉलर्स में होता है, उनको उन्होंने 3 छक्के मारे थे और एक रिवर्स पे भी उन्होंने छक्का मारा था। ज़बरदस्त बैटिंग की थी कल। और आज बॉलिंग में भी वो अपनी टीम को वही सपोर्ट दिए हैं जो उन्होंने कल दी थी। अच्छा खेला नया नए बैट्समैन अमीन कप्तान ने। जिंदू एक बार फिर, इस बार और थोड़ा सा टॉप एज लगा, लेकिन सेफ एरिया में गिरा। हालांकि स्लिप लेके गेंद कर रहे हैं जिंदू। अगर हम पहले ओवर को निकाल दिया जाए, ओवरऑल काफ़ी बेहतर टीम बॉलिंग में नज़र आ रही है। इस बार गेंद हवा में, वहाँ कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गैप देखते हुए दानिश ने इसको कवर्स यानी खेल दिया और 4 रन हासिल किए। अपने ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए आएंगे हमूद। तीन इशारिया 5 ओवर का खेल ख़त्म हो चुका है। हमूद गेंद कर रहे हैं रोड एंड से। अच्छा, थोड़ी बार खींच के बॉल किया, वहाँ फील्डर मौजूद है और कोई इजाफा नहीं। 4 ओवर के अख्ताम 36 रन, 2 खिलाड़ी आउट।
नए बॉलर इलियास मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, कुवैत टीम का हिस्सा रहे हैं, नेशनल टीम का, और यकीनन वो अपनी इस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को यहाँ पे यूज़ करेंगे और अपनी टीम के लिए यूज़फुल साबित होंगे। अच्छे एथलेटिक टाइप के हैं, फिट बॉलर। पेस से ज़्यादा ये अपनी लाइन और लेंथ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, जो कि T20 क्रिकेट में ज़्यादा ज़रूरी है। कल भी उन्होंने काफ़ी कदर बेहतर बॉलिंग की थी अपनी टीम के लिए। अच्छा बॉल सीधा मिडल स्टंप में, ज़्यादा रूम नहीं देते, यही वजह है कि अमीन आराम से खेले इनको। अमीन जो कि नेशनल टीम में काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन लास्ट टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा नहीं थे। और इस बार पॉइंट से गैप बनाने में कामयाब, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और 4 रन्स। कल कुवैत चीतास ने एक बड़ा अच्छा मैच जीता। एक 123 रन पे आउट कर लिया था कुवैत शार्क्स को, और बाद में उस चेस किया। थोड़ी डिफ़िकल्टी ज़रूर आई। और अच्छा बॉल इलियास का, यॉर्कर लाइन पे रन आउट की कोशिश, पीछे अच्छा बैकअप नमिश का। आराम से प्लेस किया इस बॉल को। थोड़े से कप्तान से हिदायत लेते हुए थोड़ा सा कप्तान को उन्होंने ऊपर लिया है, उस गैप को फिल करने की कोशिश की है जहाँ से भी सिंगल बनाए। अच्छा बॉल, लगता है कि ये भी बाउंड्री हो जाएगी क्योंकि फील्डर्स के ऊपर से गया, और 4 रन्स। अमीन सर्किल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, पावर प्ले का प्रॉपर यूज़ करते हुए 30 यार्ड सर्किल के ऊपर से खेल देते हैं। उनके मालूम है उस जगह फील्डर नहीं है, तो 4 रन्स मिलेंगे। इस टूर्नामेंट का 43rd 4। इलियास को चाहिए कि अमीन को ज़्यादा रूम ना दें। पहले भी ऐसी ही एक बॉल पर उन्होंने 4 रन्स हासिल किए थे। इस बार दानिश ने चौका मारा है, माफ़ कीजिएगा, हमें अभी भी करेक्शन करवाई है हमारे स्कोरर साजिद ने। एक अच्छा रन। दोनों बैट्समैन हमने देखा है कि चौका मारने के बाद वो जल्दी नहीं करते हैं, उनका मालूम है 10 रन बन चुके हैं, वो स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं। 5 ओवर में 46 रन बन चुके हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं, 9.2 का रन रेट है, और ये सब उस पहले ओवर की वजह से हुआ जिसमें मुनीब से बॉल कंट्रोल नहीं हो सकी और तकरीबन 26 रन बने एक्स्ट्रास मिलाकर। लेकिन उस एक ओवर की अच्छी बात कि हार्ड हिटर बैट्समैन जो हैं आमिर महमूद अलमारूफ आमिर मुल्ला जल्दी आउट हो गए, जो हार्ड हिटिंग में अपना सानी नहीं रखते, और पिछले मैच में भी 53 रन बनाए थे उन्होंने। इस बार बॉलिंग में थोड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि नमेश जो हैं उनको बॉलिंग के लिए लाया गया है। नमेश लतीफ़ अच्छे ऑलराउंडर हैं, बड़ी ज़िम्मेदारी से बैटिंग करते हैं,
हालात को, नज़ाकत को देखते हुए नमिश इस बार बॉलिंग करेंगे। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल था जिसका फ़ायदा उठाया दानिश ने। कवर्स की यानी खेला जहाँ फील्डर मौजूद है, एक ही रन बन पाएगा। अच्छा बॉल, एक ही जगह पे उन्होंने सेम जगह बॉल किया, तकरीबन उसी फील्डर के पास बॉल गया जहां दानिश ने खेला था। एक रन का और इजाफा। 48 फॉर 2 इन 5.2 ओवर, पावर प्ले का लास्ट ओवर। अच्छा बॉल था, फील्डर मौजूद है गली की जानिब, कोई गलती नहीं की और कोई रन नहीं। साथी कमेंटेटर मौजूद हैं यहाँ पर। विनोद, वेलकम टू द कमेंट्री बॉक्स एंड प्लीज़ कंटिन्यू द कमेंट्री। Very good morning. Thank you, Tariq sir. We welcome all the viewers. This is match number 2 for the day. Cutaway, backward a point. 2 easy runs by the batsman. Danish Javed is looking very, very good off the back foot. A slightly strange field. There's a slip, there's a backward point, there's a wideish short third man, and there's a cover point. There was no fielders in front of to stop the singles in the covers, and now there's been a fielder who's been removed from the slip and been brought into the cover area. Now the skipper. They've been scoring at a very good rate, 51 for the loss of 2 wickets. 6 overs done. The only batsman out is Amir Javed, the explosive Amir Javed, who was the star in the very first match. He scored a brilliant 50. He was out early today. Again, an exceptional catch in the slips. Bowlers Munib was bowling with a lot of pace. Hurried Ahmed Javed and ensured that he got an outside edge. Is batting very well. He's batting on 18 of 15 deliveries. Ilyas is continuing his second over. Strangely, he's bowling around the wicket. He left arm beautiful ball, and the celebration continues. Excellent bowling there. The angle that Ilyas has created bowling around the wicket has really worked for him. And an easy catch for Naveen Jacob, the wicketkeeper, behind the stumps. Wicket number 3. It's 51 for 3 now. The batters out are Ahmed Javed, Anis Iqbal, and the captain Amin was the last man out for 7.
Cheetas has walked into bat. The fall of the captain, Amin. He has joined the opener, Danish. Ilyas will be charged up. I would like to see a slip in place. If there is a hint of movement, new batsman in, surely you'll want a slip in place. Excellent stuff there from Ilyas. Shiraz taking strike. Angling the ball slightly inside. He's making the batsman play, the new batsman, which is very, very important. The left hammer has created an angle from around the wicket. Going wide of the crease, again bowling well within the stumps. Played with soft hands towards point, easy single there. They have a deep point. Pretty strange field settings. They have a deep point, it is slightly wide. They don't have a third man. They have a wideish third man. They have a point in the front of square in the circle. They have a short cover. Very well bowled. Ilyas is ensuring that every time he's bowling, he's making the batsman play. The batsman playing the ball into the ground and the ball ricocheting onto the grill. We hope everything is fine. That is a good spirit's been showed by the fielding side, trying to check on the batsman. Batsman looks very good, and that's good news. Ilyas is back to his bowling mark, going around the wicket to Danish. This time slightly wider, slightly slower, brilliant. Danish has fallen for the trap. Change in pace has helped. Fielder is Nasir. He's very, very athletic. The fielding placements are really working. Every time the bat is playing the ball in the air, they're finding the fielders. The well set Danish is walking back. Kuwait Cheetas are 4 wickets down, 52. Shot selection has been slightly poor. Ball could have been left alone. It was a wide delivery. The all-rounder Yasin Patel has walked in to bat. He is joining Siraj. 2 new batsmen at the crease. This is the 4th match of this competition. Shiraz will be taking strike. And Nimesh will be continuing from the road end. The field is now well spread out. 3 fielders behind on the square inside the circle. There's no fielder there on the leg side saving the single. There's a deep square leg, a deep mid wicket which is pretty straight, a wideish long on, long off. Here's a cover point, deep cover point. Watchfully played there, dabbed inside edge, the ball really tickling away towards the square leg. Quick running, excellent running from Siraj. The moment he hit the ball, he knew that there was 2. And Yasin is very, very quick, very, very athletic. He's ensured. Now it's going to be very interesting. The running between the wickets surely is going to be much, much better. Quick people
Two quick batters really batting. See, plenty of singles and plenty of doubles. Again, this time trying to be cheeky, no one behind. Excellent shot. He's dabbed the ball. The ball is racing away towards a fine leg. Now another boundary. That's good stuff. Good thinking there by Shiraz. Slight shift in momentum. The runs were dried up with a few wickets falling far too quickly. But Shiraz and Yasin, surely they are busy cricketers and they are really going to keep the fielding side on their feet. Shiraz is having a very, very close look at the field. He's literally maneuvering the field, trying to find those gaps. He knows that if he plays anything with soft hands on the leg side, there is more than a chance to pick up a couple. She's bowling slightly quick. This time again, a little bit slower, trying to pull the ball. He missed it completely. Nimesh is bowling slightly more quicker. He will have to bowl to his field. He has a very strong outside field, and this time he has foxed the batsman. Bowling it up. Pitched the ball up and Shiraz played across the line all over it. Trying to get too cheeky. Another wicket down there for the Kuwait Cheetas. He literally had to play it more straighter. Brilliant bowling there by Nimesh. Nimesh has got his first wicket. He's into his second over. That's a 58 for 5. The bowlers have been really dominating the tournament right throughout. That is exceptional. The batsmen have really not applied themselves in the middle overs. It's all about rotating the strike, keeping it simple. Ones and twos are always an important aspect when it comes to putting up a score, chasing from a batsman's point of view. And the batters here have failed to apply themselves. Plenty of new faces being given opportunities. They have to make it count. Mistake. Slip in place now. The short third man has been removed. He's brought back into slip. Nimesh will continue. Slightly more attacking field. Cut away straight to backward point. That is an excellent over. Apart from the boundary of the bat of Siraj. Successful one as well. The medium pacer will continue from the garden end. He has been bowling well. There's been pressure applied from both the ends. That's the reason the Kuwait Cheetas are perishing. Wickets falling at regular intervals. Half the side are back into the hut. 58 for 5. 51 for 2. They've lost 3 quick wickets. Span of 7 runs. Ilyas this time smartly going over the wicket to the left-handed Yasin Patel. Played off the back foot defensively. A bit of advice there from the captain. He's talking to his bowler, ensuring that they are sticking to the plan. Yasin Patel. There's no third man. The third man is inside the circle. Again, defended straight to the covers. Batsman, two new batters at the crease. They're taking their time.
But you have to compliment the bowler and has been very, very good. We love to see a mid-off inside the circle, try to apply more pressure. Again, flashy drive outside the off stump, but it was way too wide. Bowler doesn't look too happy. Been wide after a long, long time. Bowling has been pretty impressive. Ilyas left arm over to Yasin Patel. All in the stump, so brilliant stop there. Excellent stuff there from Ilyas. Fielding of his own bowling. He's kept Yasin quiet. 3 dot balls, apart from the wide being bowled. Gently dab the ball towards long on, easy single there. Yasin is showing good composure. He's not trying to play in the air. It's a good smart thing. You need a small partnership to be building. You need to get things back on track. New batsman is Sharif. He'll be taking strike for the first time. And Ilyas goes back to bowling around the wicket. Going wide at the angle. Excellently played off the back foot. Easy single there for Farooq. Ilyas is into his third over. He's bowled very, very economical. 14 runs been given, 2 wickets he has picked up. Bowling close to the stumps, into his pads, flicked away towards deep mid wicket. Easy single there. It's going to be Nimesh who will be continuing to bowl. Slight discussion between the captain and the bowler. The bowler surely wants a change in field. Fielders have been on their toes. Excellent fielders here. Nimesh, Hamood, Nasir, a few to name. They are very, very athletic, very fit, very quick across the turf. The spinner, the off spinner will be bowling. He'll be bowling the left hander for the first time. There's a slip in place. Widey short third man. Backward point, Ilyas. There's a short cover. Still there being 4 fielders inside. No extra fielders been called in. Driven handsomely through the covers straight to the deep extra cover fielder. Easy single. Elegantly played there by Yasin all along the ground. Which is showing great application is Yasin. Muhammad Farooq will be taking strike to Nimesh. Farooq is a hard hitter. He loves going hard at the ball. We'll have to wait and watch. How long is he going to resist himself? Surely a big shot is around the corner from Farooq's bat. This time, ball slightly on the shorter side. Played off the back foot straight to deep extra cover. Easy single. Adnan, the skipper, is not trying to over attack. He is being very, very cautious. The only attacking fielder is the slip in place. He still maintained 4 fielders inside the circle. No extra fielders been called in to apply any sort of pressure. Once again, bowled slightly slower. Played on the back foot straight to point.
Yes, doing the fielding. They're hurrying things pretty quick and fast. Once again, very well bowled, extra bounce, played off the back foot. Yasin looks slightly surprised with the bounce. Trying to dab it away on the onside. Another dot ball. Once again trying to cut it away, but too close to cut. Into the turf. Ball running away towards short third man. It's pretty wide. Very well bowled, excellent stuff, and he's been stumped. Naveen Jacob. He's too quick for Yasin Patel. Slightly, very well bowled. The ball tossed up, bowled much more slower. Literally, the batsman got beaten and being dragged out. He induced a false stroke. That is excellent work there from Naveen Jacob. Very, very quick. He has very quick and swift hands. Another wicket falls. The defensive approach this time has not paid any dividends for Yasin Patel. He is a very attacking batsman, but trying to apply himself given the conditions, given the situation of the match. 6 wickets down now, 64. We are halfway through this innings, 10 overs being bowled. Everything Adnan is trying is working. This time there's going to be change in bowling, is it? Pramod will be bowling. The new bowler is Pramod Vargas. Sorry. I beg your pardon. I beg your pardon, the new batsman is Pramod. He's taking strike. He'll be playing his first match in this tournament. Mohammad Farooq. Slight appeal, animated appeal there. Getting the bottom of the bat, no elevation there. Robin Joseph is the new bowler. Pramod Vargas, he'll be taking strike. He's the new batsman who has walked in the fall of Yasin's wicket. Well bowled, played away into the offside. Pramod is off the mark. Robin Joseph slightly quicker, trying to go over the top. The fielder running in. Umesh Latif, who sprinted but was unable to get his hands anyway close to the ball. 2 easy runs. Mohammad Farooq trying to go over the top. He's been very, very patient. He gets away with this false stroke. Ball really falling in between Edson and Nimesh. Right in the gap. Very, very lucky this time. Very well bowled, right in the block hole, trying to dig it away.
Mohammad Farooq. That's the end of over number 11, 68 for the loss of 6 wickets. The batters of the crease are Mohammad Farooq and Pramod. The batsmen out are Amir. He was out cheaply today, scoring 1 maximum. Danish Javed was out for 18. Anis Iqbal was out for 2. Amin Nijaz again was out cheaply, single digit 7. So was Siraj. He was out for 7. Yasin Patel was the last man who was stumped for 3. There's been plenty of extras, 19 extras in this innings. Any batsmen have failed to beat the extras. Pramod is on strike. This time is the skipper. Adnan straight away. A valiant setup there by the fielder. Front up point, at cover point. Was inside the circle. He got his hands to it, but couldn't hold on. Adnan is the bowler. Straight away created a chance. The very first ball. He'll be disappointed. A single to follow towards deep cover point. He's tossing the ball up. Very well played there. Back, but straight back to the bowler, Mohammad Farooq. Once again, trying to go for the big shot, trying to sweep. There's beaten. Again playing it in the air this time. Nimesh, it looks like the fielder is Nimesh. And Mohammad Farooq has perished trying to go for the big shot. He's been very patient in his innings of 10 balls, but couldn't hold himself back. Nimesh Latif, again, is a very good fielder. He just ran towards his left around 10 yards. Easily got under the ball and ensured that the catch was taken comfortably. He made it look so easy. Kuwait Cheetas are struggling at the moment. Wicket number 7 is down. Haseen is the new batsman. Now we are into the bowlers. And surely Adnan will like to wrap things up as quickly as possible. From here on, he doesn't look and he wants to bowl those 20 overs. He wants to get the remaining 3 wickets. Very well bowled, slow through the air. He's inviting the batsman to take him on. That's the end of a very successful over from the skipper. Very effective 1-2. 1 run on a wicket there. 69 for 7 after over number 12. It's going to be Jobin Joseph, the bowler. He'll be continuing from the garden end. Watching the new batsman, he would surely want to attack a bit more, but he's sticking to his same field. 4 fielders inside the circle. All of them pretty much defensive on the edge of the circle. 1 extra fielder has been called in from deep backward point. So we have a backward point, we have a cover point, we have a slightly wideish short third man, short cover, a short fine leg inside the circle. An extra fielder. That was an excellent delivery there. The batsman beaten, all ends up. This time left alone, actually left alone by the batsman. That's Haseen, the bowling all-rounder. He's walked into bat with the fall of Farooq's wicket.
The over rate has been slightly slower from the fielding side. They are slightly behind. They'll have to make things a bit quick and fast. Watchfully played towards a square leg. Easy single. The last recognized batsman is Pramod. Let's wait and watch how Pramod takes things from here on. He has almost 7.3 overs to bat. Joseph bowling pretty quick, handsomely driven. Skipper unable to stop the ball, getting his fingertips, but the ball really tickling away towards a long off, easy single. Strange enough, we have not seen a few more fielders inside, with Asim taking strike. There's a widey slip. Yes. Outside edge, not really, flying away towards the cover point. Surely Adnan should be applying more pressure and trying to get in a few more fielders, forcing the batsman to go over the top. Beautifully played there, into the covers, easy single. As I mentioned, there are no fielders saving those singles. Adnan sticking to the 4 fielders in the circle. He'll be continuing his second over after bowling his first over, a successful one. It was very, very economical. Adnan is a very, very smart bowler. He'll be tossing the ball up. He loves flighting the ball, inviting the batsman to take him on. Slip in place, short cover, 2 fielders, backward point and a cover point. Again, played straight back to the bowler. There's no fielders strangely towards the short mid wicket or anyone on the onside. Tossed up, there was a chance. Extra bounce, deceiving both the batsman and the wicketkeeper. Batsman's foot sliding outside the crease, but Naveen Jacob failing to collect the ball. Another chance goes begging. This time played straight to covers. Exceptional bowling there from and brilliantly bowled, keeping a slip in place has worked. Outside edge, easily pouched by the slip fielder. That is very, very, very well bowled by Adnan. Bowled slightly slower to the air, the ball gripping, taking the outside edge. Seen having no answers. Adnan picking up his second wicket. Exceptional stuff there from the fielding side. The field that slip was Dawood. Adnan will continue with the same field, no extra fielders. He's picked up 2 wickets so far. 2 more wickets to go, and Adnan should be wrapping up things quick and fast. Again, watchfully played. Outside edge, trying to play the ball towards the onside, the leading edge flying away towards cover point, short cover point in place. You can literally see that Adnan is making the ball talk. He's not trying anything silly. New batsman Praveen Raj, who has walked in and is walking back.
He looks very astonished looking back at the pitch. Jobin was the fielder, an easy catch to Jobin. He hadn't to move an inch. Again, the batsman trying to play towards the onside, getting a leading outside edge. Plenty of close catching has been really watched in this tournament. Plenty of slip catching. The catching has been brilliant in the slips throughout this tournament. It's a low scoring game. 72 for 9. One last wicket. Pramod is the last recognised batsman. And the field for him is pretty defensive. And rightly so, the wicketkeeper is up to the stumps. Very well taken there by Naveen. Jobin is surely bowling pretty quick. Decent pace. There's no deep third man. Everyone is on the edge of the circle. They want to allow the single and want a Prameen off strike. They want. Then he goes for the glory shot. Adnan is under it. And he was strolling back. That is a big miss. Easy chance been put down there by the skipper. He took it very casually. He himself is finding it hard to believe that he's dropped the catch. Kicking the turf. Surely. The innings should have been folded at 73, but Pramod luckily gets a reprieve. Again, there's no fielders on the offside. It's very, very strange. Number 11 batting. They have a deep cover. Long off. A deep mid wicket. Naveen again is up to the stumps. Played off the back foot. Easy single towards deep extra cover. And is allowing those singles easily, which is very, very strange. You would want to have a much more attacking field for the number 11. Score has moved down to 75 for 9. We are into the 15th over. Defensively played into the gap, but the non-striker doesn't seem interested. He is sent the 11 back. Shafiq. Again, Shafiq watchfully plays it straight towards cover point. A dot ball to end the over. Adnan will be continuing. Jobin was very unlucky not to pick up a wicket. And Adnan, who has bowled brilliantly, he's picked up 3 wickets. It's been the pick of the bowlers. Bowling is loopy off spinners. Pramod will look to make something happen. If he continues with his defensive approach, Adnan surely will get the better of him. Some way, big shot is around the corner, but Adnan will tempt him, hold slightly. There we go, he's played it in the air, straight to Nimesh. Excellent catch, a second catch for Nimesh in this match. Sliding away, throwing himself down. And Pramod, as I mentioned, was definitely and surely going to go for the big shot. He played it straight over the bowler's head, but Nimesh made good ground. And they have bowled out the Kuwait Cheetas.
cheaply here for 76. 76 is the target. Hi, good morning, and here we have with us an exceptional three-dimensional player, a very well-known friend, Adnan. What I speak about your bowling, batting or fielding, but today we're going to speak about your bowling first. So it's a very good wicket to bowl actually. The ball is gripping, it's turning very good. We have to bat focusedly. If we have to achieve this target, still we have to bat because their bowling lineup is very good. They have an exceptional spinning spell. Before going on to your batting, I want to only hear about your bowling. Leave your team aside. Tell me about your spell. 4 for 1. My spell is like, I just bowl on the right areas, which actually it almost clicked for me. So this is the only thing. If you bowl continuously on one spot, they will make a mistake.
and they did. Absolutely, you're a very experienced bowler. You got a chance now to bat. What are you looking to wrap this thing as quickly as possible? Or you're going to go defensive? No, I'm not going to be defensive. I will play my national game. If I will get an opportunity, straight away I will go for it. It's a small target, but a tricky one. All the best, Adnan. Thank you. Thank you. Have a good one too. We'll have a short break and we'll catch you in a few minutes. We're chasing a target of 76. Kuwait Cheetas will be taking field in a few minutes.
A very good morning, and we welcome all our viewers to catch us back for the second innings, which is a few seconds away. The field is all set, the umpires are ready, the bowlers are ready, the batsman taking strike is the captain himself, Adnan Idris. He'll be playing alongside Edson. Ball number one, quick ball straight to point, and it's been dropped. Amir Javed was taken by surprise. Played off the back foot straight to Amir. Ahmad Shafiq created a chance. Kuwait Cheetas have floored it. In a match where you're defending a small target of 76, every chance has to be taken. Edson Silva, he'll be taking strike for the first time. He'll be facing Mohammad Shafiq. These batsmen are attacking. Excellent delivery. That was a quick ball. Love to see a second slip in place. There's one slip slow for the short third man inside the circle. A deep backward point, slightly wideish. Here's a fine leg. Wide fine leg. There's a square leg. A wideish mid on. A straightish mid off. Cover. That's a brilliant shot. Played off the front foot this time. Amir giving chase. Easy couple of runs into the gap. That's a good start there. Very lucky start for Adnan. He's been dropped off the very first ball. Mind you, Adnan Idris is a dangerous batsman, so is Edson. They have a very, very attacking opening pair. They love going after the bowling. They love to play their shots. They're not going to hold back at any stage. They like to get on the front foot. They like to go over the top. Ahmad Shafiq has started brilliantly. Excellent bowling, short ball is cut away, up and over. What a shot that is. The first maximum. He's played the uppercut. He's used the pace of the bowler, and the ball has sailed up and over. Third man. Excellent shot. It's gone off the face of the blade. It's surely not an outside edge. Intentionally played there by Edson. That's an excellent back foot stroke. Shafiq is testing the batsman with the bumper. The batsman responds. This time he goes fuller. Leading edge, trying to play it on the onside. The ball really lobbing through. Fielders are on the edge of the circle. Excitement all around with the bowler batting and fielding. Edson has got off to a great start. He's 9 of 4. Running at almost 12 runs per. Oh, very well bowled. Adnan trying to chase the delivery. It's beaten in the end. That was a great over. Apart from the 6 over third man, Mohammad Shafiq. He's bowled a mixed over. He's bowled it full. He's bowled it straight. He's allowed the ball to swing, and he was punished when he tried the short delivery. Yasin Patel, the left arm spinner, he will be bowling from the garden end. A mix of spin and pace. Yasin is very much comfortable bowling with the new ball. Mind you, he's a finger spinner. It's not that easy to bowl with the new ball, but he is experienced. The ball will surely skid on. We'll have to wait and watch if there's any turn, because generally the new ball hardly turns. There's a slip in place. The Kuwait Cheetas have to be on their feet. They have to pick themselves up. Although their target is small, they have to try and create a chance here and there. And
ensure that they get their hands when a catch has been offered. Amir Javed was the culprit. Dropped Adnan of the very first delivery. Yasin Patel bowling around the wicket, going slightly wide of the crease, and there is a slight hint of turn. Edson allowing the ball to go by. Just wants to have a look at what's in there for the spinners in this pitch. Wide of the crease. There's a hint of turn there from Yasin. Great start. Bowled 2 dot deliveries to begin with. Bowled slower through the air. Edson going across the line. He's beaten because Yasin bowled it slightly slower. He slowed his pace down. He's tossing the ball up, inviting Edson. Stamp slightly quicker. Head of the back foot. All the fielders are converging, trying to save those singles. Excellent over by Yasin. This time slightly back of length. Trying to cut it away off the stumps. No room for the batsman to play the cut shot. Very well bowled there by Yasin. Yasin is changing his line length and pace very, very smartly. Excellently bowled. Arm ball to finish the over. Ball sliding into the batsman. Watchfully played. Made an over been bowled by Yasin Patel. Captain will certainly be very pleased with Yasin. Looks like there's going to be spin from both the ends. Praveen Raj, the star performer of the first match, he will be bowling. He will be replacing Mohammad Shafi from the road end. Adnan Idris has been very watchful. He's 1 of 2. And Edson, he's been batting on 9 of 10. It's 10 for the after 2 overs. There is a slip in place. Backward point, slightly very short third man. Cover point. Short mid wicket. Plays the reverse. He goes for the slog sweep and he's just successfully hit it over the top. That's one of the favourite shots of Adnan. I beg your pardon, there was a slog sweep. Adnan is a very, very attacking batsman. Again, trying to go for the sweep, this time the conventional sweep. Trying to play it along the ground. There's a long on and long off in place. So he's trying to play it a bit more squarer towards the mid wicket or square leg. He knows if he beats the infield, very well bowled there, very well bowled. Excellent bowling there from Praveen Raj. He's followed it up by 3 dot balls. Very good comeback. Praveen Raj into his first over. There's going to be a change in field. They're going to push back a deep mid wicket and they're going to bring the mid on inside because Adnan loves to go slightly squarer on the leg side. Have to wait and watch, cut away, but straight to backward point. Yasin is the fielder. Have to wait and watch how Adnan goes. The mid on is inside. Is he going to go much more straighter over the bowler's head?
This time short and it's pulled away. Easy pickings for Adnan. He is bunted that huge six, which lands on the pavilion. Certainly a new ball will be called for. Effortlessly hit there by Adnan. He's picked it the length and he's deposited it over square leg. Praveen Raj, he was greeted with a 6 and the over was sealed with a 6. 12 runs of this over. Adnan surely not holding back, going aggressive as he normally does. Yasin Patel will be continuing. He'll be bowling with a slip. Left leg goes towards the mid wicket, and the batsman opening up after completely missing. He's going completely across the line. Is Edson. He should be looking to play much more straighter. This time bowled into his pads, watchfully played. A dot ball. Yasin is wearing his line. They're surely hunting for their first wicket is the Kuwait Cheetas. This time slightly shorter, punched off the back foot into the gap. The ball races away into the point fence. Another boundary for Edson. Both these openers are dealing in boundaries. Adnan is dealing in sixes and Edson is dealing in boundaries. Excellent stuff there. A rare bad ball from Yasin, slightly shorter. This time tossed up, he goes across, he's going huge. Is it got the distance? We'll wait and watch. Yes, it does. Just crosses the line. The fielder making a valiant effort to jump and reach it, inches up and away. Excellent shot. Pramod Varghese was the fielder there at long off. Edson taking him on. Edson is a very confident batsman. He's backing his ability. He's not afraid of Yasin. This time again up the back foot, beautiful shot. The ball is screaming away to the point when this time backward of point. Earlier hit the ball front of point, this time it was back of point. It hit a bit late. He allowed the ball to come on. Yasin bowling quicker. Surely Edson expecting him to bowl a quicker ball after being hit for a 6. Plenty of mind games between the batsman and the bowler. Yasin, after bowling a maiden over, very expensive in this over. A boundary, a 6 and a boundary to follow. All coming off Edson's bat. They have raced to 37 after 4 overs. They're looking in a hurry. The Kuwait Eagles are looking a very confident side in their second match. Being very well led by their captain Adnan. Early Adnan bowled a brilliant spell of leg spin, taking 4 wickets. He clearly mentioned in his interview that the ball was gripping. But the attacking instinct of both these batsmen are not leaving any options for the bowlers. Anything short, anything bad, slightly off mark, they are picking them very easily. And it's pretty difficult for the bowlers as well. Spinners bowling in the power play with only 2 fielders allowed outside the circle. It's a daunting challenge for the bowlers. Three fielders on the offside. Square of the wicket. Backward point, and a cover point. There's no third man. There's a slip in place. There's no fine leg. There's a square leg. Backward square leg. We're going to take a short break. We'll be back in a few minutes.
After a short break, we resume play. Siraj will be the new bowler. He has replaced Praveen Raj. Excellently bowled, well within the stumps. Straight to Amir Javed. Unable to prevent the single. Adnan is taking a strike, he's eyeing the leg side, he's watching the fielders, he has a huge gap. And the only fielder on the leg side is at a deep mid wicket. This time outside edge slashes, the slip has been removed away and the ball races away towards third man. Another boundary for Adnan. They had a slip till the last over, he's been removed this over and immediately outside edge running away towards third man. Very lucky there for Adnan. The captain Amin has placed himself straight towards a short ball. He's taking on, we'll wait and watch. The fielder converging under it. Excellent catch there. Asin is the fielder and Adnan perishing. As I mentioned earlier, he loves going over the mid wicket. This time he played it straight to the fielder. Never made any attempt to go squarer or straighter. Finding the fielder, excellent catch by Asin. The first wicket really falling and the skipper walks back. Surely he will be very upset with himself because he picked the only fielder on the leg side. Siraj bowling his first over, immediately facing some success. 42 for 1. The new batsman who's walked in is his southpaw Nimesh Latif. The left-hander will be taking as Adnan hit the ball in the air, the batsman crossed. Edson will be on strike. Nimesh at the non-striker's end. They're going to stick with the same field. Edson loves going a little bit more straighter over long on. He'll have to wait and watch. Hold a slightly quicker cut away off the back foot. Yasin chasing the ball. Excellent throw. Another couple of runs to Edson. Siraj is not tossing the ball up to Edson. He is pretty much away, but it will be very interesting if Siraj tosses the ball and invite Edson to go over the top. This time slightly slower. Edson plays it watchfully into the offside. No run. The non-striker really not interested. Plenty of fielders converging on the offside. And down the leg side, quicker ball, offline this time, drifting down the leg side. Any bat and that would have been another boundary. Short ball, split it, is flat batted it toward mid-on. Fielder slightly throwing off balance. End of Siraj's successful over. 8 runs, but a wicket in his over. This tournament has given plenty of youngsters a
great opportunity. Plenty of new faces have been given a chance to play alongside the national players, gain experience. Everyone who's been in good nick and form have been rewarded to play in this tournament. If you run through the charts, Meet Bowser is the leading run scorer so far. Big appeal. Himesh Latif facing his first ball, trying to sweep off the stumps. Excitement all around. Yasin will be continuing after being had bowled his second over, which was pretty expensive. 15 runs. Yasin has had a mixed experience in this innings. He bowled the first over, which was maiden, then he got punished in his second over, giving away 15. And now he is come back, bowling 2 dot balls in his third over. Very well bowled, slightly slower outside the off stump, inviting Himesh Latif. Is coming back. Beautifully flicked towards fine leg. Himesh Latif played it off the back foot. Flat throw. We'll wait and watch. Strangely, the fielding side haven't appealed the ball as deflected off the stumps, giving away an extra run. 3 runs to Nimish. Once again, mistiming the ball. Ball really lobbing in between. Siraj trying to reach the ball, was unable. There's no timing, no elevation, and that's the reason the ball never reached the fielders. There's one more ball to go for the power play, and then you can really spread the field. Very well bowled slightly slower, giving a hint of turn into the batsman. Ends his third over with a dot ball, 20, no loss. Shiraz will continue his second over. Edson has moved on to 28 of 21. And the score has moved on to 50 for the loss of the skipper Adnan. 50 for 1. Field is slightly spread out. Again, softly played towards the leg side. He's dabbed the ball, taking a single. There's no fielders on the leg side to save a single. Anything bowled within the stumps can be easily picked on the onside. Sensible batting there by Edson. They want to ensure that they bat very, very sensibly, apply themselves. Every player in this tournament wants to leave a mark. A
how capable he is, whether it's his bowling or batting. You do not want to throw your opportunity away. Beautifully played, flicked away there by the left-hander. Elegant shot from Nimesh. Easy pickings. He looks very, very relaxed. He's playing very, very late as Nimesh. He's not committing himself on the front foot. He's playing very close to his body, which is most important. And it's very pleasing to eye when you see a left-hander batting and batting elegantly. Nimesh is batting on 7 of 6 deliveries. Ahmad Farooq this time, the fielder, misfielding. The ball really burst through. Safely played on the offside by Nimesh. Nimesh is not taking any risk, which is very, very sensible. He's playing it along the ground, trying to play the ball late this time. Too close to cut, straight to point. No run. Siraj is trying to get his second wicket. Very well bowled this time, slightly wider. Gently played by Nimesh. No run again. And having a look on the onside. Nimesh loves to play on the onside. This time slightly shorter. Played away towards square leg. Plenty of runs available on the onside as all the fielders are on the boundary. Another over completed for Siraj. He has bowled 2 overs for 14. The only successful bowler who's picked up Adnan's wicket. Earlier today, the Kuwait Cheetas over number 7 being bowled, 56 for 1. They're going pretty steady, the Kuwait Cheetas, sensibly so. Don't want to do anything silly. Nimesh will be bowling and Hassan is the bowler. The medium pace has been brought back. He'll be bowling from the garden end. He's bowling right arm over. Excellent action there. He's got a slight jump. And played straight to short fine leg. Straight to the fielder. But Farooq unable to stop the single. The batsman strolling. Looks like the Kuwait Cheetas are not showing any intent to pick up any further wickets. The field is pretty defensive. They're just running through the motions. Sense that the game is almost out of reach. They should make one last attempt to try and pick a few wickets. This time Edson goes and he goes hard. Mid off his inside. He's sensed that. Wonderful shot. Another maximum to Edson. The good thing about Edson is he's applied himself in this innings. He's not tried to go hard at everything, which he normally does. He's held back himself, played a bit sensibly. The mid-off has been pushed back. Slower ball. This time Edson follows it up again. Huge. It goes a lot of elevation and distance. Another maximum over. Long on this time.
One at long off, one at long on. Hassan has been treated severely by Edson, showing no mercy. He's taking him on. Looks like Edson is in a hurry to finish things as quickly. Short ball this time, flat batted. Fielder running in from mid-wicket towards square leg. Another easy couple of runs there to Edson. It's a strange field placing there. I mean, there's no square leg. There's a straightish mid-wicket. It's pretty much more squarer. There's a long on, long off. There's an extra cover, deep extra cover. There's no third man. We'll have to wait and watch. This time full and straight. Edson misses it completely and he's been bowled. Cleaned up. Finally, Edson got his revenge after being punished for 2 sixes. Edson trying to get too fancy, getting carried away. He goes across the line, and the bowler going full and straight, disturbing the timber. Wicket number 2. Both the openers are back in the hut, but Edson has almost pocketed the match with a quick 43 from 26. Well on course, few more runs away, just one hit away. 71 for 2. Edson was surely looking for the glory shot. Just one hit away are the Kuwait Eagles. Nasir is the new batsman, wide down the leg side. The wicket keepers come up to the stumps. Cleanly taken there by Danish. Hassan, after picking up a wicket, giving away an easy wide. This time again very well bowled. If you look at the technique of Nasir, his leg going slightly outside the line. Watchfully played there. End of another over. The score is 72 for 2. 4 more runs needed. Nimesh will retain strike. Have to wait and watch. It's going to be the skipper himself. He'll be coming on to bowl. Inijaz will be the bowler. He'll be replacing Siraj from the road end. This time, bowling it slightly quicker. Slightly shorter. Quick running there by Nimesh. He plays it on the offside into the gap. 2 easy runs. Very well played. It's a good shot for no run from Nimesh. 2 more runs needed. 74 for 2. Trying to cut this one. Too close to cut. Trying to cut the ball off the front foot. Trying to play it late. He knows that the short third man is slightly wide. Any bat and ball, that would have been over. Again, trying to drive it,
trying to chase a wide delivery. Scores are level. With this wide, one more run, one hit, and the match is done. Oh, very watchfully played, defended. Nimesh is showing a lot of patience with the one run needed. Kuwait Eagles. Again, tempting Nimesh for an expansive drive. Kuwait Eagles be very happy, looking for their first win in this tournament. Tossed up again, cut away. The fielder is Farooq. He's given up and a single taken, and that's the end. Kuwait Eagles fetching themselves 2 valuable points and opening their account in this tournament. If you run through the table, you'll see Kuwait Falcons are leading the table with 4 points, 2 from 2. They have 2 wins from their 2 games. Kuwait Cheetas, they have a mixed bag. They have played 2 matches, they have lost 1 and they have won 1. Kuwait Eagles have played 2 matches, they have lost 1 and they have won 1. Kuwait Sharks are at the receiving end, they have played 2 matches and they lost both the matches. Exceptional performance there. Star performers are Adnan Idris for 1 earlier, helping his team to bowl out Kuwait Cheetas, and Edson 43 of 26, a quick fire 43. I'll catch you in a few minutes with the player of the match. Exceptional performance. The second match done and dusted for the day. We'll have the presentation in a few moments. I'll catch you right back. Stay tuned.
We welcome back with this splendid match. There's been a splendid performance by Adnan. He's picked up 4 for 1 in his bowling spell, and he has opened the innings batting quick fire 17. Well played, Adnan. Skipper raising his hand and ensuring that he takes his team. 2 valuable points for Adnan. Welcome back, Adnan. Easy doings here. A small target. You really bowled well first up. How was the wicket generally? Tell us about the wicket. Wicket was not that difficult to bat actually. They did mistakes. We catch up them in a very minimum total. That was the best part. And really, the guys bowled, field excellent today. Everything was to the point. Very good. I mean, it's a long tournament. Finally, you have opened your account with 2 points. If you've generally seen the whole tournament, the bowlers have been dominating all the matches. What do you think going ahead, and what is your plan? My plan is simply from the first game we are trying to restrict the other team in between 150, 140, so which we can chase because it's a bit, track is easy, but still you have to fight for it to do it. So that's why our main target is to restrict other team minimally, which we can. Great plan, Adnan. Have an excellent tournament. Some wonderful players, some youngsters. We look forward to see some youngsters. Have a great tournament. Thank you. And that was the news. Adnan was the star today, and he was exceptional with his bowling and batting. And that's it for today. We had 2 matches, 2 wonderful matches. We'll catch you tomorrow live. Thank you and have a great day.